of adult years and of sound mind has the right to determine what shall be done with his or her own body. Clearly, physicians may do nothing to or for a patient without valid consent. This principle is applicable not only to surgical operations but also to all forms of medical treatment and to diagnostic procedures that involve intentional interference with the person. Consent is the legal issue that protects every patient's right not to be touched or in any way treated without the patient's authorization. Consent. Talking of consent, in literal terms, it means permission for something to happen or agreement to do something. In medical aspect, it has been broadly divided into implied, expressed, and informed consent. Implied consent, it is not expressively granted by a person, but rather implicitly granted by a person's actions. For instance, implied consent is when a person is lying in a dental chair with his mouth open, signaling the doctor to start the procedure. On the other hand, expressed consent is when the patient authorizes the doctor, either verbally or non-verbally, to provide the treatment. It is when the patient directly communicates with the dentist. It could be in oral or written form. आपके दांतों का मुआयना किया है, आपके दांतों में बहुत ज़्यादा खोड़ जमी हुई है जिसकी वजह से आपको ठंडा गर्म लगता है। तो फिर इसका क्या इलाज है? इलाज ये है कि हम आपके दांतों की सफाई करेंगे कि दांत भी थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाए, लेकिन वो फिर ठीक हो जाएंगे खुद ही। आपने अपने इलाज के हवाले से कोई और सवाल करना है? हम आपका इलाज शुरू कर सकते हैं, आप इजाज़त देती हैं? जी मैं देती हूँ। Informed consent. It is a process of providing appropriate information to the patient. It is about educating the patient about the risks, benefits, and alternatives of the given dental treatment or procedure. The patient must be competent to make a voluntary decision about whether to undergo the process or not. Failing to obtain an informed consent before starting any medical procedure amounts to an assault to the patient. कोई पेशेंट का प्रोसीजर ख़राब भी हो जाता है, बेशक गलती से होता है, तो ये पेशेंट का राइट है और डॉक्टर को एथिकली उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये प्रोसीजर ऐसे होगी। अगर कोई रूट कैनाल करते हुए फाइल कोई टूट गई है, दांत में रह गई है, कोई इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो गया है, तो ये भी पेशेंट का राइट है और डॉक्टर को एथिकली उसको गाइड करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये हो गया है, अब इसको किस तरह ठीक करना है या कैसे रिट्रीवल करना है या जो भी करना है, पेशेंट का इसमें अमल दखल लाजमी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अरीब है। आप यहाँ किस मसले से आए हैं? डॉक्टर साहब, मेरे दांतों में कुछ काला पीला जम गया है, पता नहीं देखें क्या मसला हो गया। आप फिक्र ना करें, मैं करती हूँ इलाज। हाँ डॉक्टर साहब, आपने तो बड़े चमका दिए मेरे दांत। क्या कर दिया आपने मेरे दांतों के साथ? मेरे से ना कुछ खाया जा रहा है और बहुत अंदर किसने आने दिया है? अंदर जैसे भी आया हूँ। आप ये बताएं आपने किया क्या हुआ है आपको? मेरे दांत हिलना शुरू हो गए हैं बहुत ज्यादा। ऐसा तो सबके साथ होता है। आपने ना मेरे से पूछा है कि मैं आपको ये काम कर दूं, पता नहीं क्या कर दिया आपने मेरे दांतों के साथ। नहीं, मैंने आपको बताया था। नहीं, आपने नहीं पूछा। मैं कभी नहीं आऊंगा आपके पास दोबारा और आप पे केस क्या हो रहा है डॉक्टर आयशा? आप भी नहीं, आप टेंशन ना लें। खराब डॉक्टर हैं। मैं नहीं कराऊंगी आपसे ट्रीटमेंट। आपको क्या हुआ है? ये क्या हो रहा था डॉक्टर साहब? पागल मरीज हैं, वो तो ऐसे ही करते हैं, आप सीरियस ना लें। नहीं नहीं डॉक्टर, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अरे आप रुके रुके। In recent years, there has been a lot of awareness among patients about their legal rights. So it is very important for the doctor to take consent and inform the patient about all possible risks. When these things are well documented, it really protects the dentist. In dentistry, just as in medicine, unforeseen mishaps occur despite our best efforts. Therefore, it is just as important for dentists to obtain consent prior to every invasive or irreversible procedure.